सो अब इसका यूज क्या है, मतलब इससे फायदा क्या है? इसको हम अटैच तो कर दिए हैं, लेकिन इससे फायदा क्या है? सो लेट्स सी, इफ आई मूव दिस रूफ a bit up, then the wall is also increase parallelly. सो यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि जैसा आप जिस तरीके से रूफ मूव करेगा उस तरीके से वॉल भी अब ट्रीट करेगा। ओके, तो यहाँ पे आप लोग के माइंड में एक और क्वेश्चन आया होगा कि सर यहाँ पे तो हम एडिट प्रोफाइल करके भी तो वो सेम सिनेरियो कर सकते हैं। यस, ऑफ कोर्स कर सकते हैं, लेकिन इस दोनों में डिसएडवांटेज क्या है एंड एडवांटेज क्या है ये बता देते हैं। ओके, लेट्स create one more. You can detach all the four walls. Then how to detach? Just follow the same process. Like attach के लिए हम roof पे क्लिक कर रहे थे, detach के लिए भी हम roof पे क्लिक करेंगे, then this will attach, detach. Okay, now come to edit this profile. Click on edit profile, then draw. Now this is create. Very good. Now this one also need to edit. Oops, lines. Edit, finish edit mode. Now this is created, and now if I move this roof a bit up, then see the wall is not going parallel with the roof. Okay, you can, if you still you want to move this wall with the roof, then you have to lock when you create when you edit the profile. So click on edit profile, then use align command AL, then just click on roof face, and then click on this line, sketch line, then there is option lock. Just lock it unconstant. Again click on this roof edge, then click on this sketch mode line, then option lock option will appear, then click on lock, click on unconstant, then edit finish mode. And if I move this wall, then oops, it's not working. Why? Reset this profile first, edit mode. You can lock this line when you click on the roof bottom face. Here unconstant. There is something wrong here. This profile lock. Why this unconstant? This is always a little. Come. Maybe there is a roof issue. Let's expand this roof first.
like so. Then click on level 2, or you can go to north elevation, uh, south and west. Now click on lock. Now this is working. Okay, now this will work. Now it's working. Now if I move this roof in upper direction, then the wall is also move, and if I move this down, then the wall is also move down. Okay, so again you have still in doubt that why we will use this attached top base and detached top base. ओके, सो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि अगर ये जो वॉल है बहुत ज्यादा ही है, लाइक 50 वॉल्स है ऑलमोस्ट इन द मॉडल, एंड ये सभी को आपको एडिट प्रोफाइल करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा ये। इस कारण से हम लोग अटैच टॉप बेस यूज करते हैं ताकि टाइम कंज्यूम हो, मीन्स you will save the time while modeling. Okay, for example, if I copy this, so here instead of doing the edit profile, you just click on the wall and then click on attach top base. First you have to reset the profile. Then click on attach top base. Now this is attached. Same with all the walls. Just reset the profile, then attach top base. So this is time saving tools, and if you still use edit profile, then there is no issue to use the edit profile, but it takes time to edit the wall and then log the line and then finish mode, instead of doing just only 2 clicks using the attach top base command. Okay, so here there is 2 name, one is top और second is base. सो यहाँ पे बेस का मीनिंग क्या है कि अभी तो हम जो अटैच कर रहे थे ये टॉप कर रहे थे, और जो बेस हुआ वो नीचे का पार्ट हो गया, मीन्स 0 लेवल। ओके, तो यहाँ पे भी जो बेस रहेगा वो वॉल, फ्लोर, सीलिंग और एनी पैरेलल लाइन से आप बेस अटैच कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी, लेट्स क्रिएट फ्लोर हियर, finish, and go to right view, just move a bit down, click on the wall, then attach, click on attach top base, then in the option bar there is an option base, just click on base first and then click on the floor. Now this is attached to base. One more time, click on wall, then attach, then click on attach top base command, then click on base. Now click on floor. Okay, same process if you want to detach, just click on detach, then click on floor, and it will detach. There is no need to click on base, and in the detach option base option will not appear. You have to detach all command is available here, means if you want to detach all, then it will
detach all the wall connected with this floor. Like if I connect all the wall with this floor, attach with this floor, then if I detach this wall from the floor, then click on detach, then click on detach all. Oops. Select all walls first, then detach top base, then detach all. So I hope you guys understand what is attached top base and detached top base, and how we will use and where we will use. Okay. Now यहाँ पे एक और सिनेरियो है. What if I delete this roof? And this is edit profile. Okay. Attach this wall to the roof. Now delete this roof. So see, this is back to normal. The wall is back to normal because इसको जिस होस्ट पे ये अटैच था वो होस्ट अब नहीं रहा, उसको हम लोगों ने डिलीट कर दिया. इस कारण से ये बैक टू नॉर्मल में हो गया. इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि कोई बंदा पेड़ पे लटका हुआ है और वो पेड़ अगर टूट जाए या फिर कट जाए तो वो बंदा नीचे गिर जाएगा. सेम सिनेरियो यहाँ पे भी है कि ये रूफ से अटैच था, मतलब लटका हुआ था, और जैसे ही ये रूफ डिलीट हुआ वैसे ही ये बैक टू नॉर्मल पोजीशन पे आ गया. ये लेट्स सी वन मोर टाइम. If I delete this roof, then it will come in the normal position, or you can say normal form. कभी कभी हम लोग को रेफरेंस नहीं मिल पाता है. लाइक हमको अटैच तो करना है लेकिन रूफ, फ्लोर और सीलिंग से नहीं, किसी और चीज से. सो क्या ऐसा हो सकता है? यस, ऑफ कोर्स हो सकता है. तो उसको हम कैसे करेंगे? फर्स्ट क्रिएट वॉल, ओके, देन गो टू साउथ व्यू, टॉप कांस्टेंट लेवल 2. सो यहाँ पे लेवल से तो टॉप कांस्टेंट हो गया है, ठीक है. अब तो आप लोग सोचेंगे कि इस अटैच टॉप बेस को हम लेवल से भी तो अटैच कर सकते हैं, लेकिन ये अलाउ नहीं करता है, ठीक है. तो इसको हम, अगर हम रूफ के साथ नहीं करना चाहते हैं, सीलिंग के साथ नहीं करना चाहते हैं अटैच, या फिर हम फ्लोर के साथ अटैच नहीं करना चाहते हैं, तो फिर और नेक्स्ट ऑप्शन क्या है अटैच करने का? सो द नेक्स्ट ऑप्शन इज रेफरेंस प्लेन. शॉर्टकट की इज RP. Just draw a reference plane from any direction, and now click on wall, then attach top base and click on reference plane. Now this will attach. See, like so. Okay. यहाँ पे रेफरेंस प्लेन बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं. अगर आपको जिगजैग वॉल चाहिए और उसको अटैच करना है रेफरेंस प्लेन के थ्रू, तो आई होप सो मे बी इट विल वर्क, बिकॉज जिगजैग रेफरेंस प्लेन का तो दो ही ऑप्शन आता है. इधर यू कैन ड्रॉ पिक लाइन यूजिंग पिक लाइन और ड्रॉ स्ट्रेट. दिस इज पिक लाइन और यू कैन ड्रॉ स्ट्रेट लाइन. सो बोथ द सिनेरियो में ये स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ होगा. जिगजैग हो सकता है एडिट प्रोफाइल बना के, फिर इसके बाद हम इसको अगर जिगजैग करना चाहें तो ये बन सकता है.
यहाँ पे अगर आप लोग रेफरेंस प्लेन ऐड करना चाहते हैं तो लेट्स सी, नो इट्स नॉट वर्किंग हियर. So here you can use reference plane to attach wall or column or any vertical element. Okay, if I draw if I place a column here like architecture structure column on this, then in this click on column, then here you will see attach top base option is also available. But if you create or if you I don't think so. If you click on beam, then you see there is no option available for attach and detach top base for this beam because it's horizontal, not vertical. Okay. So I hope you guys understand what is attached top base and detached top base. Okay. Please do like, share and comment. Thank you so much.